नमस्ते, राम नाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बुला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस में हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंतरा देव। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम द अनसेडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, कैट्सकी, सिल्वरटूथ एंड मस्क्वीम नेशंस। May is the Alzheimer Awareness Month. IG Wealth Management is organizing a walk in 21 cities in BC to raise funds for Alzheimer or dementia. Please go out on May 28 to support and fundraise for Alzheimer's Society. May is also Asian Heritage Month. Asian Canadians were the one of the first settlers in Canada. They contributed a lot to Canadian society. There are about 1.8 million Canadians of Chinese descent. According to states, Canada have 5.1% of Canadian total population. China is the second top source country for new permanent residents, the third large source of tourism. Go out and celebrate Asian Heritage Month. आप सभी के फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद एंड विद सम वर्ड्स फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. Benisi Mobile Detailing Services. They offer commercial trucks, cars, SUV, boats, bikes, RVs, and much more. Just give them a call at 778-808-2859. Just give them a call at 778-808-2859 and they will do all kind of services at your home. Thank you sponsors for your support. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फिजी न्यूज को लेकर आ गए हैं बिग प्रसाद जी। नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज के साथ मैं हूं विक प्रसाद। चेयर ऑफ द इलेक्टोरल कमीशन मुकेश नंद ने पुष्टि की है कि उन्हें फिजी फेस्ट के सस्पेंडेड जनरल सेक्रेटरी अय्याज सैयद कयूम से एक पत्र मिला है जिसमें कमीशन से एक्टिंग सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शन आना मताइदीवा द्वारा पार्टी के सस्पेंशन की रिव्यू करने के लिए कहा गया है। नंद का कहना है कि इस पर चर्चा के लिए कमीशन बाद में बैठक करेगा। हालांकि बैठक का तारीख की पुष्टि नहीं की जा सकी है। कमीशन को लिखे गए पत्र में सैयद कयूम का कहना है कि वह यह हाईलाइट करना चाहते हैं कि इलेक्टोरल एक्ट चुनाव के एक्टिंग सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस को एक शिकायत से संबंधित कमीशन की चर्चाओं और निर्णय में भाग लेने और हस्तक्षेप करने से रोकता है। उनका यह भी कहना है कि फिजी राष्ट्रीय बजट की घोषणा और बहस की ओर बढ़ रहा है। चुनाव आयोग को इस मामले को अटमोस्ट प्रायोरिटी के साथ निपटना चाहिए क्योंकि सस्पेंशन पार्टी की भागीदारी में बाधा डालता है। उधर ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट का कहना है कि फिजी फर्स्ट पार्टी के सभी 24 सस्पेंडेड संसद की अवधि के लिए पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की किसी भी कार्रवाई में भाग लेने का हकदार नहीं है। या एक्टिंग रजिस्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को सूचित करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यवाहक रजिस्ट्रार से प्राप्त कोरेस्पोंडेंस के बाद कि फिजी फर्स्ट पार्टी को बुधवार 17 मई 2023 से तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। फिजी फर्स्ट पार्टी के सभी 24 सांसद सस्पेंशन की अवधि के लिए पार्लियामेंट में किसी और भी वेतन के हकदार नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि सभी 24 एमपीज को सभी रिलेटेड एक्टिविटीज में भाग लेने से रोक दिया गया है, जैसे कि पार्लियामेंट मीटिंग्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, असेंबलीज इत्यादि, जब तक कि रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन हटा नहीं लिया जाता।
कथित चोरी के आरोप में 42 वर्षीय एक महिला को आज नसीनो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि महिला पर चोरी के 21 मामले का आरोप है और आरोप है कि उनके ग्राहक के बैंक अकाउंट से $11,000 से अधिक की चोरी उन्होंने की है। आरोप है कि जुलाई 2018 से जनवरी 2019 के बीच आरोपी बैंक टेलर के रूप में काम कर रही थी, जब उसने कथित तौर पर कस्टमर के अकाउंट से ऑफिशियल बैंक विड्रॉल स्लिप का उपयोग करके और ग्राहक के हस्ताक्षर करके पैसे निकाले थे। मामला जब सामने आया तब ग्राहक बैंक में अपने बैंक बैलेंस के बारे में पूछने आया था। शनिवार रात अपनी पत्नी की कथित रूप से हत्या करने के आरोप में वुनिकेरो लंबासा के गेलेंदामू बस्ती का एक 48 वर्षीय किसान पुलिस हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर बैत से चाकू से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आप देख रहे फीजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। लैंगली के इरशाद इकबाल की तलाश का दुखद अंत हो गया है। वैनकूवर पुलिस का कहना है कि इरशाद इकबाल का शुक्रवार को शव बरामद हुआ फॉल्स क्रीक में मिला और 36 वर्षीय व्यक्ति अप्रैल के अंत से लापता था। वीपीटी के मुताबिक एक पासवाई ने इमरजेंसी लाइन को फोन करके, जिसके बाद ऑफिसर्स इकबाल को पानी से किनारे लेकर आए। आदमी की मौत का कारण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। वीपीडी का कहना है कि कोरोना इस मामले का देखरेख कर रही है। वीपीडी का कहना है कि इरशाद के लापता होने की जांच अभी भी जारी है। परिवार सभी को उनके निरंतर प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने इरशाद की खोज में तब तक योगदान दिया जब तक कि वो नहीं मिल जाए। इरशाद बीसी सॉकर लीग और फिजियन सॉकर लीग में शामिल था। जब भी उसे मौका मिलता वह कम्युनिटी को वापस समाज को सर्विसेज देने के लिए पीछे नहीं हटता था। इकबाल के चाहने वाले उसकी तलाश कर रहे थे क्योंकि वो आखिरी बार 29 अप्रैल को 2 बजे के आसपास पैसिफिक बुलेवार्ड पर पार्क कैसीनो के पास देखा गया था। वैनकूवर पुलिस का कहना है कि वह अपने दोस्तों से अलग हो गया था। आप देख रहे फीजी इन फोकस, अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। लंदन सेवंस इस सप्तांत जारी रहा। पूल प्ले के अंतर्गत फिजी और आयरलैंड के बीच में जो खेल हुआ उसमें फिजी की जीत आयरलैंड से 33-12 से हुआ। अर्जेंटीना ने फिजी को 40 पॉइंट्स टू 12 से पराजित किया। फिजी ने जापान को 54 पॉइंट्स टू 7 से पराजित किया। अन्य पूल खेलों में सामोआ की जीत फ्रांस से 28 पॉइंट्स टू 21 से हुआ। उधर ग्रेट ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका को 19 पॉइंट्स टू 15 से पराजित किया। न्यूजीलैंड ने यूएसए को 35-17 से पराजित किया। न्यूजीलैंड की जीत जीबीआर से 20 पॉइंट्स टू 5 से हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 26 पॉइंट्स टू 12 से पराजित किया और न्यूजीलैंड ने पूल प्ले के अंतर्गत साउथ अफ्रीका को 32 पॉइंट्स टू 21 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल्स के अंतर्गत अर्जेंटीना की जीत आयरलैंड से 28-14 से हुआ। सामोआ की जीत ग्रेट ब्रिटेन से 12 पॉइंट्स टू 5 से हुआ। फिजी ने ऑस्ट्रेलिया को 19 पॉइंट्स टू 5 से पराजित करते हुए सेमीफाइनल में अपना जगह बनाया। उधर न्यूजीलैंड ने फ्रांस को 19 पॉइंट्स टू 17 से पराजित किया। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना की जीत सामोआ से 10 पॉइंट्स टू 7 से हुआ और उधर फिजी ने न्यूजीलैंड को बहुत ही सुंदर तरीके से 19 पॉइंट्स टू 17 से पराजित करते हुए फाइनल में अपना जगह बनाया। फाइनल अर्जेंटीना और फिजी के बीच में हुआ, जबकि फिजी को पहले हाफ में एक रेड कार्ड प्रदान किया गया और अंतिम परिणाम अर्जेंटीना 35, फिजी 14। अंतिम लेग के बाद स्टैंडिंग्स कुछ इस प्रकार से है। न्यूजीलैंड 200 पॉइंट्स पर है, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है अर्जेंटीना 179 पॉइंट्स को लेकर। फिजी तीसरे स्थान पर 156 पॉइंट्स को लेकर है और फ्रांस चौथे स्थान पर 151 पॉइंट को लेकर है और पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जिनके पास 133 पॉइंट्स है। ये पांचों टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है और आप न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं तो विक को कॉल कीजिए और हमारे स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अबूल फिजी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस और हमारे स्टूडियोज़ में हमारी न्यू होस्ट है एंड गेस्ट, जिससे हम आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके बारे में थोड़ा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप भी उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सो अंट्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए एंड टेकिंग अपॉन दिस बिग ह्यूज, इट्स अ जॉब काइंड ऑफ,
and I know it's a volunteer work. So welcome. Thank you so much, Kamila Singh ji, for having me here in this studio and for Fiji in Focus. Thank you. Yes, definitely it's a lot of commitment with my other things, but आप इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं, all those things आप दे रहे हैं हमारी सारी ऑडियंस के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी इस जर्नी में आपके साथ थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूट करूं, व्हाटएवर मैं कर सकती हूँ. You remember I approached you long time ago, almost a year ago. Yes. Because मुझे पता है आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं. मुझे हिंदी ही होस्ट की ज़रूरत है, because हमारे देखने वाले सुनने वाले सभी फिजी के और हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी है, राइट? सो हम इंग्लिश बात भी करते हैं, डिफरेंट शोज़ है उसमें हम इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो ये शो है इसमें हम कोशिश करते हैं हिंदी बोलने के लिए. आपका हिंदी बहुत अच्छा है. कुछ अपने बारे में बताइए. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. इतना कुछ नहीं है, बट कोशिश करती हूँ मैं हिंदी बोलने के लिए, बिकॉज ये हमारी नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया है. मैं एक्चुअली इमिग्रेट किया है यहाँ पे 2008 में. सो आई केम हियर ऑन 2008 एंड माई जर्नी स्टार्टेड. जब हम सारे इमिग्रेंट्स वुमेंस आते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं हमारे. हम एक नया कंट्री, नए लैंड, नए सिटी में लैंड करते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल थिंग. एंड कनाडा ने मुझे बहुत ही वार्म वेलकम दिया है. बट ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट हमारा स्ट्रगल्स भी होते हैं हर इमिग्रेंट्स वुमेंस का. हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें जॉब्स के मिलने का प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें एक नया सीरियस से लाइफ को शुरू करना पड़ता है. सो लाइक एवरी अदर वुमेन, I also have gone through the same struggles, right? On top of that, you are embracing all the new things in your life. So that was my thing, but luckily I started with my career here. I work for Hydro right now, and along with Hydro मेरा बहुत दो पैशन एरिया है. एक है सीनियर्स केयर, जो मेरी बहुत दिल के करीब है, और दूसरी है वायलेंस, वुमेन फ्लीइंग फ्रॉम वायलेंस. ये दो एरिया मेरे लिए बहुत बहुत क्लोज टू हार्ट है, और उसी दो एरिया में मैं बहुत ज़्यादा अभी काम करती हूँ, वॉलंटियर्स करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है आफ्टर माई वर्क. I have an 11-year-old son. He just turned 12 right now. And one of the reason मैं और भी ज़्यादा क्यों दोनों एरिया में करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सीनियर्स, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन, उनकी जो आप देखोगे नेक्स्ट 5 years, इट्स गोइंग टू गो सो हाई राइट नाउ. एंड जितनी हमारी सपोर्ट सिस्टम है उतना नहीं है. तो कैसे हम उन सीनियर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ऑल्सो सीनियर्स, इट्स ऑल्सो देयर फैमिली. वो कनेक्शन है, उनकी बच्चे, उनके सारे. So that's what I work for. Another thing is women fleeing from violence. I was a victim of violence. I have suffered a lot. I have come out, and जब मैंने अपने पैर पे खड़ी हुई और मैंने देखा कि जिस वक्त मैं तकलीफ में थी और मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था, because of lots of reason, because it's still a stigma in our society. Yes. So मैंने सोचा क्यों ना इस एरिया में, because there are thousands and thousands of immigrants women are there, जो लैंड तो करते हैं एक ड्रीम के साथ, एक खुश ड्रीम, अच्छा ड्रीम के साथ, बट वो ड्रीम हर किसी का पूरा नहीं हो पाता है. So that's why anything I can do to help them. My motto in life is, अगर मैं एक इंसान को at the end of the day help कर सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और I can sleep really peacefully in the night. Yeah. बिकॉज जैसे आपने कहा कि आपका दो पैशन है, तो सीनियर्स केयर और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये दोनों बात पे टॉपिक पर लोग ज़्यादा बात नहीं करते, बिकॉज देयर इज सो मच focus is given to the youth and the kids, right? And I'm not saying they are not important. Of course, children are our future, so we do. But at the same time, अगर हम strong रहें, mother is strong, the grandmother is strong, the family networking it stays together and stays strong. बहुत अच्छी बात आपने बोली, उस पर हम फिर आगे चल के भी आपके साथ बात करेंगे. और फिर भी बिकॉज लाइक यू वर्क विद द सीनियर्स, आप वर्क करते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस एज अ काउंसलर और एज अ हेल्पर. अगर किसी को किसी तरह की ज़रूरत है, किसी तरह की हेल्प चाहिए,
तो कैन एनी टाइम दे कैन कॉन्टेक्ट यू एंड टॉक एंड एवरीथिंग जो हम ऐसे बात करते हैं एवरीथिंग इज़ केप्ट कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है. बहुत और फिर यहाँ पर जब हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है तो लोग फिर ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ट्रस्ट नहीं होता ना. लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है एंड बट समटाइम्स यू डू हैव टू ट्रस्ट समवन, राइट? Yes. बी एबल टू बाउंस योर आइडियाज और क्या हो रहा है आपके लाइफ में. इफ़ यू आर न्यू इमिग्रेंट टू द कंट्री, देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क इन दिस field to be done. Even though there is a lot of funding, but it's not reaching out to the people that it should reach out to. That's what I see. Yeah, absolutely. You have nailed it. हमारे पास resources अगर है पर जितने immigrants women होते हैं जब वो आते हैं और जब ऐसा situation में पड़ते हैं, and I can tell you from my situation and what I have faced because I have gone through first hand experience, उनके पास उस वक्त सोचने का समझने का कैपेसिटी जा चुका होता है. वो इतनी डिप्रेशन और इतनी दुख में चले जाते हैं कि उनके लिए वो रिसोर्स पता करना इजी नहीं होता है. प्लस उनके लिए तब चाहिए कोई एक हैंड, कोई एक सहारा जो उनको समझे विदाउट जजमेंट. जो जिनके पास वो अपनी हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात बोल सके, बट दैट विल बी केप्ट इन अ सीक्रेट कॉन्फिडेंस एंड उनको कोई जज न करे. सो मैं इसलिए इस टाइप के मेरे पास मेरा फ़ोन हमेशा 24/7 ऑन होता है बिकॉज आई डोंट नो कौन मुझे कॉल करेगा, कौन मुझे मैसेज करेगा. बिकॉज उस वक्त हो सकता है मैं उसके पास जा ना पाऊँ, बट मैं उसको गाइड तो कर सकती हूँ, उसको सपोर्ट कर सकती हूँ. वो बहुत ज़रूरी होता है उस वक्त. Yeah. And especially the woman that has gone through. With that, we'll stop right here. Thank you. Because one day I need to talk to you in length about your survival. आप कैसे domestic violence or family violence or whatever you have been through that, and you are working with the woman. There's a bigger, and you can always watch us on Asian Pulse as well. So आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं next week. Thank you so much. Thank you. Hello and welcome. My name is Ramesh Ramachandran and you're watching a special broadcast here on DD India. And with me is a very special guest, the Deputy Prime Minister, Minister for Finance, Strategic Planning, National Development and Statistics of Fiji, Professor Biman Chand Prasad. Mr. Minister, welcome to DD India. Thank you. It's a pleasure to be here. Great to have you on the show as well, Mr. Minister. May I begin by asking you about your ongoing visit to India? You were in Bengaluru for the India Energy Week. You are now in New Delhi for talks with Indian leadership. Who all have you met in Bengaluru and New Delhi so far, and how did your talks go? Well, first trip to India after the elections, and I'm very happy that I was able to come. We had the election in December. The government, so it's a 6 weeks old government. The India Energy Week in Bengaluru was very good. I was very impressed with the display of new technology, new entrepreneurship in the whole area of clean energy and India's contribution to decarbonization generally. As part of that, I also participated in a high-level panel with other ministers from like-minded countries who were attending the forum, but also had an opportunity to talk to the Minister for Petroleum, Minister Puri, and we had some really good discussion and how India could help small countries like Fiji in adopting some of those technologies which at the grassroots level, at the micro level, could be quite significant. Indeed. And how did your talks with Minister Jaishankar in New Delhi go? Yes, that was a very good meeting. We had an hour-long discussion on a range of issues, and obviously, I thanked him and the government of India, Prime Minister Modi, for their support during the pandemic, and India's leadership generally in the world today, and indeed India's leadership for the global south.
and Honorable Minister Jay Shankar is at the forefront of that, and so I was very pleased, and we had a very, very good discussion on a range of issues. Like you mentioned, Mr. Minister, yours is the first official visit from Suva to New Delhi after the formation of the new government in December last year. Are you satisfied with the outcomes from your talks in New Delhi and Bengaluru so far, and have you achieved the objectives from this visit? Absolutely. I mean, this is our new government's priority is very clear. We have said that we want to engage more meaningfully, more deeply with our democratic partners. And of course, India historically has been a natural partner for Fiji. And Prime Minister Narendra Modi ji's visit to Fiji in 2014 laid that great foundation and gave that impetus to build our relationship. And we want to take it to the next step. We want to build it and build it in a way that is sustainable, that is deep, that is engaging, and is mutually beneficial. Indeed. And that gives me a perfect segue to my next question to you, Mr. Minister, and that has to do with India-Fiji relations, political, economic, people-to-people ties. How would you describe the current state of play in bilateral ties? Well, I mean, we have a rich history. People-to-people relationship is very strong. You remember that the first indentured laborers went to Fiji in 1879. And so for the last 143 years, Fiji has had a very, very close relationship. And over the last so many years, I mean, India is the largest democracy in the world. And there's so much for us to learn from India on institutions of democracy governance. But other than that, I mean, we have a very strong, cultural, educational, religious link. People of Indian origin see India as a very, very important historical country, and with people-to-people ties, it's just getting stronger and stronger. And there is always this great desire, especially not only just the people of Indian origin. हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं, लीजिए देखिए. प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी टू मेक नोट्स. पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूजिक फाउंडेशन, वैंकूवर प्रेजेंट्स संगम, confluence of Carnatic flute and Hindustani Shehnai at Burnaby Hall, 7837 Canada Way in Burnaby at 7 p.m. on May 28. Tickets are only $30. For more information, go to the website tickets at pjsomvancouver.org. खालसा Reunion 2023 ये होने जा रहा है इन फिजी on July 29, 2023 at Khatri Hall in Ba, Fiji. There are only limited tickets are left for this event. For tickets and more information, please go on their Facebook page at Khalsa College Ba Fiji Reunion 2023. Super Moms Foundation of BC are doing another fundraising for Heart and Stroke Foundation of BC. This is taking place on May 27 from 11 a.m. until 3 p.m. There will be halal lamb pulao with tomato chutney for $15 per serving for vegetarian. There will be vegetarian pulao with chutney, and the location is 12070 80th Avenue in Surrey in their back parking lot. To place your order, call Sylvia Prasad 604-761-3271 or Kesni Mishra at 778-955-5614 or Shabna Nisha at 604-767-0468. Walk for Father's Day
walk or run is taking place on June 18 at Burnaby Lake. You can do 2, 5 or 10-kilometer walk for a run. This is their 25th anniversary walk for prostate cancer. For more information, please go on their website at fathersdayrun.ca. हमारे पास इतने ही समय था। अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस शो को देखने के लिए हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फिजी इन फोकस से जुड़ते रहेंगे। इस शो को आप फिर से देख सकते हैं एवरी थर्सडे at 2:30 p.m. and on Sunday at 4 p.m. Vancouver time on Channel 4 and in Calgary at 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर भी फिजी इन फोकस को देख सकते हैं। Please press the like button and do not forget to share. Fiji in Focus brings 3 other shows. आपके लिए लाते हैं Asian Pulse TV on every Wednesday at 1:30 p.m., Thursday at 8:30 p.m. and Saturdays at 5:30 p.m. Kamila Singh Talk Show on every Mondays at 10 a.m. and Sundays at 5:30 p.m. VT Vibes TV on Thursday at 10 p.m. and Sundays at 4:30 p.m. Please watch all our shows. अब हमारी मुलाकात होगी next Tuesday at 10 p.m. only on show. हम अभी सभी को शुक्रिया अदा करते हैं for spending your time with us. Please watch all our shows and like and share on YouTube. I am your host and दोस्त अंतरा देव। धन्यवाद।